प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर राज अभिषेक हब 9 जूनर सन्धिया 7:15 विश्वर कोन कोन नेता आहिब हे आमी आपनालोকক जनाम। लगते এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো যে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰি এনডিএৰ নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছিল ভাষণ প্ৰসংগত। কেৱল সিমানেই নহয়, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত চৰকাৰ গঠনৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে সন্ধিয়া 7:15 9 জুনৰ সন্ধিয়া 7:15 এনডিএৰ নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজ অভিষেক হ'ব আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দুটা কাৰ্যকাল অতিবাহিত কৰাৰ পিছত তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে আগবাঢ়িবলৈ গৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আজি এনডিএৰ নেতা ৰূপে ৰাষ্ট্ৰপতি সাক্ষাৎ কৰিলে আৰু তাৰ পাছতে 9 জুনৰ সন্ধিয়া 7:15 ৰাজ অভিষেক হ'ব আৰু সেই একেটা দিনতে ভাৰত পাকিস্তানৰ খেলু হ'ব 8 বজাৰ পৰা। সবিশেষ জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজ অভিষেক সন্ধিয়া 7:15 9 জুনৰ সন্ধিয়া 7:15 নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজ অভিষেক হ'ব। এই ৰাজ অভিষেকৰ দিনটোত কি কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব? ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক আজি সাক্ষাৎ কৰিছিল। সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰিছিল এনডিএৰ নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এনডিএৰ নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক আৰু তাৰ পিছত 9 জুনৰ সন্ধিয়া 7:15 যে শপত গ্ৰহণ কৰিব সেয়া ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে। এনডিএৰ নেতা ৰূপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত সাক্ষাৎ কৰিলে আৰু তাৰ পাছতে বক্তব্য ৰাখিছে। সেই দিনটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব? টি20 বিশ্বকাপত 9 জুনৰ 8 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 8 বজাৰ পৰা ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ খেল। টি20 বিশ্বকাপৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খেল। এই খেলখনত ভাৰতে জয়ী হৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীক উপহাৰ দিব বিচাৰিব। তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপত লোৱাৰ পিছত ভাৰতীয় দলে উপহাৰ দিব নৰেন্দ্ৰ মোদীক। কেৱল সিমানেই নহয়, তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ যোৱা তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 7:15 9 জুনৰ সন্ধিয়া 7:15 ৰাজ অভিষেক ঘটাব আৰু সেই দিনটোত দেশৰ বিৰোধী নেতাসকল থাকিব, শাসকীয় নেতাসকল থাকিব, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নেতা আহিব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সেই ৰাজ অভিষেক চাবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ 121 কোটি ভাৰতীয়ই সেই দিনটো অপেক্ষাৰত হৈ ৰ'ব। তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী। এনডিএৰ নেতা ৰূপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসন কৰিবলৈ যাব, তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ পাছত এনডিএৰ চৰকাৰ আকৌ এবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে এনডিএৰ চৰকাৰ। গতিকে এই সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আজি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এনডিএৰ নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কি মন্তব্য কৰিছিল, দেশৰ জনতাক উদ্দেশ্যি কি কৈছিল এনডিএৰ নেতা কৰ্মী কি কৈছিল, বিজেপিৰ কৰ্মীসকলক কি উদ্দেশ্যি মন্তব্য কৰিছিল, ভাৰতৰ জনতাক শুনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত। और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष है और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना,
ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 एंड एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था, मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। इन 10 साल के कार्यकाल के दरमियान भारत की वैश्विक जो छवि बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधु के रूप में भारत उभरा है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वास है ये 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है, अनेक तनावों से गुजर रही है, अनेक आपदाओं से गुजर रही है। ऐसी विकट परिस्थिति दुनिया ने बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है। हर देश इन सारी समस्याओं के बीच अपने आप को बचाए रखना, बढ़ाते रहना, चुनौतियों का डगर डगर पे सामना कर रहा है। हम भारत वाले लोग, हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान, भारत के प्रति उनका आना बहुत तेज गति से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। विकास के नए ऊंचाइयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले 5 साल में बनने वाला है।